तो पिला माने सब केमिति अछो तो लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन सब तुमको दिया हिथिला आज डिस्कशन करबा मोस्ट प्रोबेबल प्रॉब्लम तो मु 50 टा प्रॉब्लम तुम पय बाछिछि जो 50 टा प्रॉब्लम भितर 100% तुमरा प्रॉब्लम बा न्यूमेरिकल्स आसीबो जोडा प्रॉब्लमेटिक प्राय तो फिजिक्स रे प्रॉब्लम क्रिएट कराए प्रॉब्लम बुझौ कि नहीं तो से प्रॉब्लम को डिस्कशन करबा आसो जमा टाइम वेस्ट करबानी परीक्षा अल्प दिन रहिला मात्र आ काली गोटे दिन पर तापर परीक्षा स्टार्ट हो जिवो तो टाइम वेस्ट न करिकी तो आमे प्रॉब्लम स्टार्ट करबा जेहेतु लाइव सेशन रे प्रॉब्लम क्रिएट हला तो सेति पय मु तुम पय रेकॉर्डेड कर दोछि एंड आज रात्रि ही अपलोड कर देबी आशा करी समस्त देखिबो आ तुमरो संग मानु को 100% शेयर करिवो तो देखो प्रथम प्रॉब्लम प्राय तो प्रत्येक वर्ष ए प्रॉब्लम आसे तो प्रॉब्लम दिछि फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस find the resultant resistance between points A and B. Find the resultant resistance between point A and B when four resistance are connected as under. तो चारिटा छुआ रेजिस्टेंस देछि हमको A और B भितरे टोटल रेजिस्टेंस बा R इक्विवेलेंट काढिबार अछि बुझौ छी नै तो देखो पिला माने प्रथम देखो ये जो 2 and 1 ये दी जन जाको कोन अछंती लेट आपु नै जिबा R1 कर दबा एंड 3 and 6 को R2 कर दबा ये बोथ आर देखो सीरीज पिला 2 1 3 6 तो जदि हमें काढिबा छुआ तो R1 कते हि जिवो तो R1 कते हि जिवो जेतु सीरीज रे अछंती तो हमें जानिचे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन RS R1 plus R2 plus R3 and for parallel combination 1 upon R parallel is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 so तो देखो छुआ R1 ने दीटा को सीरीज अछंती तो सीरीज अछंती जेहेतु तो हमें कोन करबा R1 is equal to 2 ohm plus 1 ohm that is equals to 3 ohm same तळे देखो छुआ R2 equals to 3 ohm plus 6 ohm that is equals to 9 ohm बुझियला कि नहीं तो R1 हैला 3 ohm R2 हैला केते 9 ohm तो एबे हमें कोन करबा देखो छुआ करंट एपटू को आसिला देन एपटू जाउचे ए दी जन जाको कोन छुआ पैरेलल ए दी जन जाको पैरेलल तले हमें कोइ परबा R1 and R2 both are parallel R1 parallel to R2 सेति भाई R इक्विवेलेंट टोटल R equivalent केते हिजबो छुआ नाता फार्मूला R1 into R2 divided by R1 plus R2 तो R1 into R2 केते हिजबो छुआ 29 27 ओम divided by 29 12 ओम तो 27 बाई 12 ओम 3 लो काटने 3 9 300 9 बाई 4 तो ये देखो पिला रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल 200% गोटे क्वेश्चन आसीबो तो रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल 200% गोटे क्वेश्चन आसीबो तो ये क्वेश्चन बुझियाला तो नेक्स्ट आउ जो रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल को टाइप रो क्वेश्चन आसी पर देखो जो हुस्टन ब्रिज कांसेप्ट रू आसी पारे एमिति लेट छुआ 3 ओम देछि एंड 6 ओम देछि एंड 4 ओम देछि देन 8 ओम देछि find the equivalent resistance between A and B so देखो equivalent resistance between A and B देखो जते बळे देखिवो ना 3 divided by 6 नॉर्मली कोन छुआ A B C D भाबिनो A B C D चारिटा रेजिस्टेंस if A upon B equals to C upon D if A upon B equals to C upon D then कोन हे जिवो छुआ जदी
ए बी रो रेशियो इज इक्वल टू सी डी रो रेशियो ही होची तो ताले हमर ए जो मझी रेजिस्टेंस टा ये शॉर्ट हिजबो बुझिले कि नहीं तो माने आ भितरे करंट फ्लो हबो नाही जदि छुआ आ भितरे करंट फ्लो हबो नाही जदि आ भितरे करंट फ्लो हबो नाही तो जो करंट आ भितरे जीवो सेम करंट आ भितरे भी जीवो एंड जो करंट आ भितरे जीवो सेम करंट आ भितरे भी पास करबो ताने हम कहि परिबा ये छुआ कोन सीरीज रे अछंती एंड ये भी सीरीज रे अछंती तो ताकू जदि हम R1 दबा एंड आकू R2 दबा तो ताले छुआ R1 केते जीवो 303 plus 6 that is equals to 9 ohm and R2 केते हिजबो छुआ ना R2 is equal to 4 plus 8 that is equals to 12 ohm and R1 and R2 ये दीटा कौन छुआ parallel R1 and R2 दीटा को parallel so R equivalent is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2 तो R1 into R2 कहते हैं जो 9 into 12 divided by R1 plus R2 जो 12 9 21 तो 3 3 9 3 7 21 36 upon 7 तो ये भी गोटे टाइप रो क्वेश्चन ए टाइप रो भी रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल एमिति आसी परिबो और छुआ कोन आसी परिबो सेम व्हीटस्टोन को एभलिया चित्र न देखि से एमिति भी देई पारे A B let R छुआ ये चित्र जहाँ ए चित्र को जदि हमें एडजस्ट करबा तो ये हमको ए चित्र ही मिलिबो ए आउ बी ए चित्र जाए चित्र से आखि बुझ के एमि चित्र देखियो माने व्हीटस्टोन बीसी पकेबो ये आर खाली चेक करिबार कोन अछि ये रेशियो समान होछि ना r by r is also equals to r by r upon r is also equals to r by r तो यही कंडीशन सैटिस्फाई करला माने अबे व्हीटस्टोन बीस पकेबा एंड ए भीतर रो करंट फ्लो होबो नाही तो जेतु करंट फ्लो होबो नाही ए दी जण कोन हिजबे सीरीज हिजबे ए दी जण सीरीज हिजबे एंड ए बोथ आर कोन हिजबे पैरेलल हिजबे तमे लिखि परिबा R1 कते हिजबो 2R एंड R2 भी R2 छुआ ए दी जण कते हिजबे सेमती 2R ताले R इक्विवेलेंट कोन हिजबे R1 एंड R2 बोथ आर पैरेलल R1 पैरेलल टू R1 पैरेलल टू R2 तो एंकर कॉम्बिनेशन दी जन का पैरेलल सो R इक्विवेलेंट हम लिखि परिबा R into R upon R plus R that is equals to R square upon 2R that is equals to R upon 2 सो ये गुटे टाइप रो प्रॉब्लम आसी परिबो बुझो कि नहीं एंड जदी भी क्वेश्चन एथरो डिफिकल्ट करूची ताल छुआ एमिति प्रॉब्लम दबो बोलছো देखो छुआ जदि भी क्वेश्चन एथरो फिजिक्स क्वेश्चन ले रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल क्वेश्चन डिफिकल्ट कला तो ताले क्वेश्चन एमिति आसीबो each resistance R each of resistance R सबरो रेजिस्टेंस केते दिबो R दिबो ए केस रे कोन करबो ए बी भीतर मागिछि का भीतर ए औ बी भीतर किछु करबुनी ए बी भीतर उठे गारो टान दबु ए बी भीतर उठे गारो टान दबु देखिलु ए बी जो लाइन टणा हला ए लाइन लो ऊपर जहा तळे से आना
तो एभलिया केस को कौन को आम छुआ सिमेट्रिक कंडीशन सिमेट्रिक कंडीशन को एभली सिमेट्रिक कंडीशन ले कौन हम ना एई जंक्शन ले करेंट जीव नाही एई जंक्शन ले करेंट जीव त माने एठू जो करेंट आसीबो से करेंट सीधा पळेबो एपटे जो करेंट आसीबो से करेंट एमती सीधा पळेबो जतबे सीधा पळेबो तो आमे कोन करि परिबा देखि एठी भी आर अछि एठी भी आर अछि ये आर आर बोथ आर कोन हे जवे छुआ सीरीज है कि कते हेबे तो ये आर आर कते ही जवे 2r ये भी आर आर कते ही जवे 2r तो ये 2r आर ये दिटा कोन हे जवे पैरेलल हे जवे 2r आर पैरेलल हे गले कते ही जवो 2r स्क्वायर अपॉन 3r जे 2r अपॉन 3 तो ये भी 2r ये r कोन हे जवे ये दिटा को पैरेलल हे जवे ये भी कते हे जवो 2r स्क्वायर अपॉन 3 छुआ जदी भी डाउट होउची कमेंट करो मु आउथर कहबी कमेंट कले निश्चित मु आउथर तुमको बुझेबी एंड वर्तमान ये सब कोन हे गले ये इक्विवेलेंट हे गला एंड ये भी इक्विवेलेंट बाहर गला वर्तमान ये r 2r/3 एंड r ये तीनटा को कोन हे गले सीरीज ये r 2r/3 एंड ये r ये तीनटा को कोन हे गले सीरीज एंड एटी छुआ कते थिला r एंड r ये दिटा मिसी कते हे जबे 2r सीरीज रो छन ना तो बर्तन ये तीनटा कोन हे गले पैरेलल तो हम लिखि परिबा 1/r is equal to 1/2r/3 plus 1/2r/3 plus 1/2r that is equal to 3/2r plus 3/2r plus 1/2r 2r कॉमन ले गले 3 plus 3 plus 1 that is equal to 7/2r तो r is equal to कते ही जबो ना 2r/7 r इक्विवेलेंट कते ही जबो 2r/7 बुझेले कि नहीं आकु चक्र कोन सिमेट्रिक कंडीशन बा मिरर कंडीशन बुझि परछ ना एबले जोडी देथिबो मझिरो गारटानी को देखो दी पटरे सिमेट्रिक होउची कि नाही तो रेजिस्टेंस रो 8 रो आ किछि भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आसीबोनी एमिति क्वेश्चन आसीबो एंड रेजिस्टेंस रो जदी क्वेश्चन क्लियर होउछो ताने कैपेसिटेंस भी सेम जहा को आमे नेले रेजिस्टेंस बदल आमे कैपेसिटेंस फुल गुडे पुट करी पारिबा एंड ए क्वेश्चन प्राय तो प्रत्येक वर्ष आसे एंड ए वर्ष भी आसीबो तो ये गुटे न्यूमेरिकल तुमको कहबा गले पाई गलो गुटे न्यूमेरिकल मिली गला देन छुआ फाइंड द resultant capacitance of the following combination of capacitance between point A and B भितर समिति ये कैप अच्छा रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटेंस एंड सीरीज एंड पैरेलल भितर कोन डिफरेंस ना रेजिस्टेंस सीरीज रे R1 plus R2 होबो बट कैपेसिटेंस सीरीज रे C1 into C2 by C1 plus C2 रेजिस्टेंस पैरेलल ले कोन होबो R1 into R2 by R1 plus R2 and resistance in series रे कोन हि जिवो सॉरी कैपेसिटेंस इन सीरीज रे कोन हि जिवो C1 plus C2 ठीक रेजिस्टेंस रो उल्टाटा होची कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल ले रेजिस्टेंस रो उल्टाटा होची रेजिस्टेंस रो उल्टाटा होची हेलो हाँ ये रेकॉर्डिंग करछि क्लास हाँ 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 भल कर सब हाँ हम क्लास टा सारी दे
अच्छा देन कहछि फाइंड द अच्छा कैपेसिटेंस ए तीनटा को कोन छुआ ए तीनटा को सीरीज रे अछन ए तीनटा को सीरीज रे अछंती एंड आ सहित ये कोन करछि पैरेलल करछि बुझियो छी नै प्रथमे तीनटा को सीरीज को कॉम्बिनेशन कर देबा तीनटा सीरीज रे कोन हे जिवो फर्स्ट लेट आर C1 नै जिवा तो C1 C1 इज इक्वल टू कोन हे जिवो now 1 upon C1 equals to 1 upon 2 microfarad plus 1 upon 4 microfarad plus 1 upon 2 microfarad that is equals to jodi LCM 4 nele 4 to 2 plus 1 plus 2 that is equals to 5 by 4 microfarad 5 by 4 microfarad तो जब देखिबा C1 is equal to कते होला ना 4 by 5 microfarad तो ये तीनोटी रो इक्विवेलेंट केते आसला ना 4 upon 5 microfarad माने ये तीनटा आ सहित कोन करछथि ऑब्वियसली ये तीनटा आ सहित पैरेलल तो पैरेलल माने नॉर्मली मिसे दबा तो टोटल नेट कैपेसिटेंस केते हिजबो ना ये केते होला 4 by 5 plus 1 that is equals to 9 by 5 microfarad तार आंसर केते हो 9 by 5 माइक्रो रेजिस्टेंस जदी करि देला कैपेसिटेंस रे कोनोसी प्रॉब्लम आसीबो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा कैलकुलेट बुझियो तो सेटा बुझियला ना हां कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम फॉर व्हिच क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री एंड ये छुआ माने आइदर तुमको एमसीक्यू रे क्वेश्चन पचारि पारे एमसीक्यू रे क्वेश्चन आसीबार बहुत चांस अछि अदरवाइज 2 मार्क्स रे प्रॉब्लम आसीबार बहुत चांस अछि कहीं ना कोन पचारछे ना हमें जानछि छुआ क्रिटिकल एंगल फार्मूला sin c क्रिटिकल एंगल फार्मूला sin c इक्वल्स टू 1 upon mu हो कि ना तो हमको मागे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लिख परिबा mu इक्वल्स टू 1 upon sin c तो 1 upon sin c क्रिटिकल एंगल कते दैछि 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू कते गला 2 तो mu रो वैल्यू कते आसीबो मागी दिला हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आदर से mu दबो क्रिटिकल एंगल मागी परिबो नले क्रिटिकल एंगल लेकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मागी परिबो एंड गोटे बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू रा क्वेश्चन कोन स्टार मारी दोची व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ mu व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस आंसर कोन हबो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस बुझेला क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा बापुनो भाई पानी बोतल ला तो चार्जेस +1 microcoulomb +3 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed at the corners of an equilateral triangle गोटे इक्विलेटरल माने कोन छुआ तार ईच साइड यार सेम जार साइड केते दैछि 10√3 सेंटीमीटर केते दैछि 10√3 सेंटीमीटर लेट आको हम नै जिबा a आको नै जिबा b एटा आको नै जिबा c एंड चार्ज केते होचंती लेट a पाखर होचंती +1 माइक्रोकूलम b पाखर अछि +3 माइक्रोकूलम एंड c पाखर अछि -5 माइक्रोकूलम बुझेला कि नै से कहै छै कोन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एट द हमकु कोन छुआ ना सेंटर काढिबार अछि सेंटर केमति काढिबा ना लेट ए पॉइंट नै जिबा d j का को दिटा सेम रे डिवाइड करिवो एंड ये जदि 10√3 हला त नै आधा कते जिवो
5√3 सेंटीमीटर एंड आमे जानचे सेंटर सेंटर जे काको केते रेशियो रे डिवाइड करे 2:1 रेशियो रे डिवाइड करे तो 2:1 रेशियो डिवाइड करले आर लेंथ टा केते हिजबो तो आमे लिखि परिबा एडी एडी लेंथ इज इक्वल टू AB रो स्क्वायर माइनस BD रो स्क्वायर रो रूट ओवर दैट इज इक्वल्स टू 10√3 रो स्क्वायर माइनस 5√3 रो स्क्वायर रो रूट ओवर दैट इज इक्वल्स टू आई थिंक 225 15 सेंटीमीटर केते 15 सेंटीमीटर जदि 15 सेंटीमीटर हैला एडी रो लेंथ 15 सेंटीमीटर ताने एओ केते हबो एओ इज इक्वल टू लिखि परिबि ना टोटल को 3 भाग करके 2 भाग नबा दैट इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एडी दैट इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ 15 that is equals to 10 centimeter that is equals to 10 to the power minus 1 meter 10 to the power minus 1 meter बोल से क्वेश्चन को देखो छुआ तो इंटरेस्टिंग हमको मागी छी कौन ना जो सेंटर रे सेंटर रे नेट पोटेंशियल केते आसबो तो सेंटर रे प्रथम देखिबा सेंटर ओ रे ए पाई केते पोटेंशियल पड़िबो बी पाई केते पोटेंशियल पड़िबो सी पाई केते पोटेंशियल पड़िबो एटा हमें जानि छी छुआ ये ए डिस्टेंस केते हला हमरो 10 टू द पावर -1 मीटर ये भी कहता है 10 टू द पावर -1 मीटर ये वो 10 टू द पावर - मीटर ये डिस्टेंस सब कौन सेम हो कि ना तो हमें जानचे नेट पोटेंशियल हमें जानचे नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू और नेट पोटेंशियल कहा कहा में पड़ो तीनटा चार्ज पाई तो पोटेंशियल ड्यू टू ए पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सी एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए केते हबो हम जानते पोटेंशियल फॉर्मूला के देन चार्ज ऑफ ए QA अपॉन 10 टू द पावर -1 प्लस के चार्ज ऑफ B अपॉन 10 टू द पावर -1 प्लस के Q अपॉन C into 10 to the power -1 एट K by 10 to the power -1 कॉमन पड़ेबो हां कि ना K by 10 to the power -1 कॉमन पड़ेबो आउ केते रहबो QA plus QB plus QC plus QC जे K र वैल्यू केते 9 into divided by 10 to the power -1 whole into A र केते चार्ज अछि plus 1 microcoulomb that is equal to 10 to the power -6 coulomb B रे केते अछि 3 microcoulomb that is equal to 3 into 10 to the power -6 coulomb plus C रे केते अछि -5 into 10 to the power -6 coulomb 10 to the power -6 से अच्छा 10 to the power -6 भी कॉमन पड़ेबो 10 to the power -6 कॉमन पड़े रे 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power -6 divided by 10 to the power -1 whole into 10 to minus कॉमन पड़े ला कितना 1 plus 3 minus 5 तो 4 minus 5 जे -1 तो -1 -6 कटियो ने -5 रहला माइनस आंसर के दबो -9 into 10 to the power 4 -9 into 10 to the power 4 वोल्ट बुझेला कि नहीं तो -9 into 10 to the power 4 वोल्ट बढ़िया क्वेश्चन बट क्वेश्चन एटा मागी देला बोल कि एटा डिटो आसीबो समथि किसी कथा नुहो हमको पोटेंशियल काढिबार अछि तो जेतोटा चार्ज पार्टिकल अछि सब पाई पोटेंशियल हमको मिसेबार अछि तो क्वेश्चन एमिति भी आसी पारे गोटे स्क्वायर एठी अछि +2 माइक्रोकूलम एठी अछि +3 माइक्रोकूलम एठी अछि +5 माइक्रोकूलम एठी अछि -10
माइक्रोकुलम बुझे कि नहीं तो व्हाट इज द नेट पोटेंशियल at the center of the square ये भी क्वेश्चन आसी पारे एंड सेम टाइम रे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पचारि पारे बुझौ कि नहीं the next question ba find the rms value of AC current I is equal to I naught sin omega t तो आम जानचे I is equal to I naught sin omega t आदर मागी पारे कौन ना गोटे मागी पारे what is the peak current that is equals to I naught RMS current that is equals to I RMS is equal to I naught upon √2 or 0.707 I naught बुझे कि नहीं एंड ए क्वेश्चन को एमती भी पचारि पारे इफ I is equal to 2 sin omega t if I equals question एमती आसीबो if I equals to 2 sin omega t what is the peak value of this current what is the तो लिखि परिबा I naught is equal to 2 बा I RMS जदि पचारला आम लिखि परिबा I naught upon √2 that is equals to 2 upon √2 that is equals to √2 एम्पियर बुझे कि नहीं √2 एम्पियर सेम जमिति I मागुची करंट मागुची अल्टरनेटिंग करंट रो समिति EMF भी मागी परिबो समिति EMF भी मागी केमिति ना E is equal to E naught sin omega t मागी देबो व्हाट इज द RMS वैल्यू केते होबो केते लिखि परिबा E naught upon √2 E naught upon √2 बुझियला नेक्स्ट बा नेक्स्ट the angle between equipotential surface and electric lines of force at a point 90 degree direct question equipotential surface and electric lines of force with angle kete 90 degree the ratio between resultant capacitance in series and parallel of two equal capacitors in series combination and parallel combination respectively अच्छा रेशियो मागिछि दीटा कैपेसिटर दीटा गोटे सी आ गोटे भी सी कह फास्ट दी जन को सीरीज रे रखी देले जदि सीरीज रे रखी देले ताकर केते हिजबो c/2 एंड ए दी जन को जदि हमें पैरेलल रे रखी देले ये केते हिजबो 2c c plus c 2c कह व्हाट इज द रेशियो सीरीज अपॉन parallel c/2 upon 2c जे केते होला 1 upon 4 और 1:4 देखो बढ़िया क्वेश्चन एटा भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये रेशियो आइदर कैपेसिटेंस मागी पारे नले रेजिस्टेंस भी मागी पारे नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो 50टा क्वेश्चन डिस्कशन करी 100% ये 50टा क्वेश्चन भितर क्वेश्चन आसीबार चांस रही बुझिला कि नहीं तो जति क्वेश्चन डिस्कशन करछि भलो भाबरे पढो द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम रो कोन द एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर -13.6 अपॉन n स्क्वायर तो ये आंसर केते हो छुआ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट that find the resultant capacitance of the following combination of the capacitors तो ये एमती देछि
2 माइक्रोफैराडे 2 माइक्रोफैराडे 1 माइक्रोफैराडे फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कोइ परबो जो ए दुटा कोन असंती पैरेलल तो ताने जदि आर इक्विवेलेंट नै जिबा C1 तो C1 केते जिवो जेहेतु पैरेलल असंती 2 माइक्रोफैराडे प्लस 2 माइक्रोफैराडे दैट इज इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैराडे एंड ये दी जण कोन असंती ये तासी गला केते 4 माइक्रोफैराडे एंड ये आसो तो कोन असई सीरीज रे तो नेट C इज इक्वल टू 1 upon C equivalent is equal to sorry direct कर दो C net equals to 4 into 1 divided by 4 plus 1 that is equals to 4 upon 5 microfarad है 4 upon 5 into 10 to the power minus 6 farad बुझे हो कि नहीं बुझे हो कि नहीं ये क्वेश्चन आराम से करी हबो the angle of prism is 60 degree is the minimum angle of the deviation if a ray through it is 30 degree angle of prism is 60 degree that means A equals to 60 agar data likho problem jete karibo first data likh debo 60 if the minimum angle of deviation dm kete chua 30 degree find the refractive index of the material of the prism find the refractive index of the material of the prism so हमें जानते direct formula कौन सा ना mu equals to sin a plus dm upon 2 divided by sin a upon 2 तो sin 60 plus 30 divided by 2 divided by sin 60 divided by 2 तो sin 45 रो वैल्यू कहते 1 by root 2 upon sin 30 रो वैल्यू कहते 1 by 2 that is equals to कहते root 2 तो आंसर आसीबो कहते छुआ root 2 कहते आसीबो root 2 ए बड़े क्वेश्चन जमा स्किप करबोनी ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन next question define work function and stopping potential for photoelectric basically work function कौन work function कौन छुआ minimum amount of energy required to extract an electron from the surface of the metal तो जब देखिबा वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h mu naught बा h mu naught इज इक्वल टू c upon lambda naught जेटी mu naught कोन छुआ threshold frequency and lambda naught equals to threshold wavelength wavelength बुझे लगे नहीं है find the wavelength of the radiation emitted by hydrogen atom when the electron jumps from n equals to 3 to n equals to 2 find the wavelength of the radiation that's direct formula 1 upon lambda is equal to rh whole into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square that is rh को rh रहिला and 1 upon n1 जोटी के डेंज के 2 रो स्क्वायर minus 1 upon 3 रो स्क्वायर जे rh whole into 1 upon 4 minus 1 upon 9 that is equals to rh whole into 36 9 minus 4 5 upon 36 जे 5 rh upon 36 तो 1 by lambda is equal to 5
RH upon 36 तो लैम्बडा इक्वल्स टू केते हिजबो ना 36 upon 5 RH आको सॉल्व कर दबो जति की आंसर अछि बुझेला कि नहीं बुझेला ए बळे प्रॉब्लम करि होबो the reactance X of an AC circuit connecting pure capacitor C at frequencies X XC is equal to कौन छुआ ओमेगा C और ओमेगा रा वैल्यू कौन छुआ ओमेगा रा वैल्यू 2 पाई FC 2 पाई FC ओमेगा कौन छुआ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड F कौन छुआ फ्रीक्वेंसी जिमते XC मागी छि छुआ सेमते XL मागी पारे XL is equal to 1 of sorry X X is equal to 1 upon omega C equals to 1 upon 2 pi FC and XL is equal to omega L that equals to 2 pi FL 2 pi FL आपुर भी प्रॉब्लम पड़िबो केमिति छुआ सी कौन छुआ कैपेसिटेंस सी कौन कैपेसिटेंस तो कैपेसिटेंस देथिबो फ्रीक्वेंसी देथिबो मागिथिबो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बुझले कि नहीं कैपेसिटेंस देथिबो फ्रीक्वेंसी देथिबो मागिथिबो कैपेसिटिव रिएक्टेंस काढेबो x = 1/2 पाई fc बा इंडक्टेंस देथिबो फ्रीक्वेंसी देथिबो मागिथिबो कैपेसिटिव सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस काढी हबो नेक्स्ट बा the refractive index mu of a medium where velocity of light b is related to velocity of light c अच्छा केमिति हम जानछे mu equals to कोन छुआ c upon v the ratio of speed of light into the vacuum to the ratio of light of the speed in the medium that is equals to refractive index and हमें पढिथिले mu is equal to c by v बा कोन इना तो बा v2 by v1 is equal to lambda 2 by lambda 1 next question बा the electrostatic potential due to an electric dipole at distance r from its center is directly proportional to the electrostatic potential is directly proportional to कौन छुआ r square v is inverse next question if the area of each plate of a parallel plate capacitor of capacitance c is doubled choose हमें जानते what is c is equal to epsilon a upon d epsilon a upon d कोई कौन छुआ ना if the area of each plate of a parallel plate capacitor of capacitance c is doubled capacitor area double होइछि कोन होइछि area double होइछि जदि area double हे गला ताले कैपेसिटेंस सेम रहइबो ना चेंज हे जिवो जदि area double हे गला कैपेसिटेंस ता जदि area चेंज होला कैपेसिटेंस चेंज होबो कि नै ऑब्वियसली चेंज होबो त हमें लिखि परिबा जो नुवा कैपेसिटेंस c dash is equal to epsilon and area कोन होइछि डबल डिवाइडेड बाय कोन d तो ताला हमें लिखि परिबा c dash upon c is equal to 2 epsilon a by d divided by epsilon a by d तो ये कैंसल तो जो नुआ कैपेसिटेंस ऑफ c dash is equal to 2c फास्ट कैपेसिटेंस रो दुगुण जदि एरिया हम डबल कर दोचे ताले कैपेसिटेंस भी कोन हिजबो डबल हिजबो the angle of magnetic diff at the pole of the earth is 90 degree
The average binding energy per if alpha is the first Bohr's radius in hydrogen atom, then the radius of the third orbit कौन हिजबो n square तो कौन हिजबो 3 square alpha, that is 9 alpha. The focal length of a biconvex lens with refractive index 1.5 mu equals to कते दीची 1.5 तार mu कते दीची 1.5. The focal length of a biconvex lens मागीची focal length, radius of curvature दीची कते r, radius of curvature दीची कते r. तो हमें जानचे कौन 1 upon f is equal to mu 2 by mu 1 minus 1 whole into 1 upon r1 minus 1 upon r2. हाँ कि ना लेंस में फॉर्मूला तो mu 2 कहते हैं वाला 1.5 upon 1 minus 1 by r1 कहते हैं जो r minus 1 by r2 कहते हैं जो minus हाँ ସେଇଟା ଖାଲି म्यूटा कोन रिलेटिव परमिटिविटी बुझी होची ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जे mu2 by mu1 एटी mu1 टा कोन हे गला 1 हे गला तो 1.5 minus 1 तो 1.5 minus 1 केते गला 0.5 into 1 by r ये पुनी कोन हो 1 by r जे 2 by r तो 0.5 into 2 जे केते 1 by r तो हमें कोइ परबा कोन छुआ 1 by f is equal to 1 by r then f is equal to कते हिजबो r f equals to r बुझियला कि नहीं हैं the angular momentum of an electron in the second stationary orbit तो हमें जानते हैं angular momentum l is equal to nh by 2 pi l equals to nh by 2 pi माने क्वेश्चन देखो छुआ आ भितरु 100% क्वेश्चन आसीबो बट वीडियो फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखिबो वीडियो फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखिबो l is equal to nh upon 2 pi तो n2 दे देला 2h upon 2 pi 2 cancel h by pi h by pi आंसर केते हो h by pi कोइ थिला क्वेश्चन कोन छुआ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट जब सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट देथिला n बदल केते पके देले 2 पके देले तो 2h upon 2 pi that is equals to h upon pi calculate the de Broglie wavelength of a particle of mass 10 gram moving with speed तो de Broglie wavelength lambda is equal to हमें कोन जानछि छुआ h upon p और h upon p जे कोन जानछे mv डायरेक्ट फार्मूला पको h रो वैल्यू पके देबो m रो वैल्यू v रो वैल्यू पके देबो आंसर आसीबो डायरेक्ट फार्मूला पुट फार्मूला गेट आंसर the range in which electromagnetic radiation of wavelength 3000 Angstrom karo ultraviolet range next question a capacitor of capacitance 2 microfarad is charged to a potential difference 50 volt. What is the energy stored? हमें जानते छो U is equal to कौन half CV square or half Q V ओके ना तो पका क्या था आंसर देइला कोन सी भी दैछि ना हैला जे हाफ इनटू सी कते दैछि 2 माइक्रोफैराड 2 into 10 to the minus 6 into 50 volt 2 कटि गला जे 50
into 10 to the power minus 6 joule. The electrostatic force between two charges distance r apart. बुझे हो कि नहीं? In vacuum is F. तो F is equal to K Q1 Q2 upon R square. K value 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. कौन कौन the force between the same charges distance कहते हैं इची r by 2 and apart in a medium of dielectric constant देची कहते हैं 2 dielectric constant देची 2 ताले f dash is equal to कहते हैं इजबो 1 upon 4 pi epsilon into dielectric constant k into q1 q2 upon r by 2 रो whole square that is equals to 1 by 4 pi epsilon into k value कते 2 into q1 q2 by r square divided by 4 4 ऊपर पड़े वाले ऐसे वाला अच्छा 4 4 कैंसिल हो गया तो कितना रहिला q1 q2 upon 2 pi epsilon into r square. So f dash upon f is equal to q1 q2 upon 2 pi epsilon r square divided by q1 q2 upon 4 pi epsilon r square. तो pi epsilon r square कटे वाला q1 q2 कटे वाला तो 4 ऊपर कटे वाला 4 divided by 2 that is equals to 2. So f dash is equal to कते हिजबो 2f f dash equals to कते हिजबो 2f बुझेला कि नहीं हैं The ratio of electric field intensity due to an electric dipole at an axial point to an equatorial point. बुझे electric field intensity at a axial line divided by electric field intensity at a equatorial line. ये कौन सा 2 kp upon rq divided upon kp upon rq. तो ये कैंसल देखते 2 by 1 और 2:1 बुझेला कि नहीं बुझेला तो नेक्स्ट the current in a circuit with a cell of EMF 6 volt and internal resistance 0.1 ohm is 2 ampere. तो I दे देला केते छुआ 2 ampere EMF केते दे देला 6 volt and internal resistance R दे देला. So आमे जानचे I is equal to EMF upon R plus R external resistance plus internal resistance. तो I is equal to कौन EMF upon external resistance plus internal आमु कौन माइती external resistance. तब लिख पर R plus R is equal to EMF upon I and R is equal to external resistance is equal to E upon I minus small h. E is equal to कहते हैं 6 upon 2 minus 0.1. That is equal to 3 minus 0.1. That is equal to 2.9 2.9 ohm. So
छुआ वीडियो को तुम सांग मान पाखु शेयर कर दियो मात्र मात्र 50टा ही प्रॉब्लम करेबी एंड 100% ता भितर प्रॉब्लम आसबो तो जो माने डरुच लास्ट टाइम रे एबे भी डरिक छ प्रॉब्लम कोठू करबा केमती कोन पड़िबो एई वीडियो को देखिनियो आउ किछि देखिबा दरकार नै A convex lens has focal length 5 meter. What distance should an object be placed so as to have a real image of magnified twice? प्रथम कथा है कन्वेक्स लेंस रो फोकल लेंथ केते देछि 5 मीटर कन्वेक्स लेंस रो फोकल लेंथ सब कोन हबो पॉजिटिव हबो एंड रियल इमेज माने कोन हेतबो इन्वर्टेड हेतबो तो इन्वर्टेड माने केते हेतबो -2 मैग्निफिकेशन केते -2 आमे जानिचे m is equal to v upon u that is equals to -2 is equal to v upon u and v is equal to -2 u v equals to -2 u and मागिछि कोन छुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कोठी अछि बुझि होछि कि नै u मागिछि आमे जानिचे 1/f is equal to 1/v minus 1/u तो 1 upon 5 is equal to 1/v बदल केते कि -1/2u minus 1/u जे केते होला 2u जदी एलसीएम नेले ये -u ये माइनस ये -1 ये -2 दैट इज इक्वल्स टू -3 upon 2u तो तने में लिखि परिबा 2u is equal to -15 and u equals to -15 divided by 2 that is equals to -7.5 meter बुझेला कि नहीं बुझेला ना सब बुझी पारलो कि नहीं नेक्स्ट प्रॉब्लम determine the refractive index of the material of a biconvex lens of radius 5 cm to have a power of 5 diopter अच्छा power is equal to 1/f is equal to कते 5 diopter दे दिछि बुझेला कि नै and radius कते दे दिछि 5 cm that is equals to 5 into 10 to the power -2 मीटर यूनिट सन देखिबो पावर डायोप्टर एस साइड दिछि आकु भी एस साइड रखि दबा बुझेला कि नै but मागी जी कोन डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आमे जानचे कोन 1/f is equal to mu minus 1 बा जोटा कोथरु mu2/mu1 तो 1 कने एयर हो जाउची एयर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तो 1 तो mu minus 1 होल इनटू 1/r1 minus 1 upon r2 तो 1/5 is कहते 5 is equal to mu minus 1 whole into 1/r1 कहते 5 into 10 to the power -2 minus ये कौन जो 1/-5 into 10 to the power -2 तो 5 equals to mu minus 1 whole into ये प्लस है गला that is equals to 2/5 into 10 to the power -2 तो आपको आरपटिक नहीं जीवा mu minus 1 equals to आमे लिखि परिबा 5 into 10 to the power -2 divided by 2 and mu is equal to कते हिजबो 25 into 10 to the power -2 divided by 2 plus 1 आपको सिंपलीफाई कर दबो जति को सेति आंसर बुझेला कि नहीं एंड लेंस फार्मूला रो सियोर 100% गोटे प्रॉब्लम पाइबे तुम हेलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन छुआ ना स्टेट ओम्स लो जानछु देन हमें जानचे ओम्स लो कोन को v equals to ir calculate the conductivity of a conductor अच्छा सर
तमें जानते रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो जोटी कि रो कौन छुआ ना रेजिस्टिविटी, रो कौन resistivity, and what is conductivity? 1 upon resistivity is equal to conductivity. So sigma is equal to 1 upon rho, that is equal to rho is equal to kete hijibo chua ra by l, ra by l, तो 1 upon ra upon l, l upon ra। तो कंडक्टिविटी रो फार्मूला कोन आसिला L upon RA, जोटी कि L देछि केते 10 सेंटीमीटर, 10 into 10 to the power minus 2 meter divided by resistance 25 ohm into area कंडक्टर एरिया को पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर जे 10 to the power minus 1 upon 25 into पाई into r वैल्यू केते 0.5 mm, 0.5 into 10 to the power minus 3 रो स्क्वायर। आपको सॉल्व करले जति हबो सेति, दैट इज द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी भितर। बुझियला? तो ये भी गोटे टाइप रो प्रॉब्लम, ये भी गोटे टाइप रो प्रॉब्लम, रेजिस्टिविटी किबा कंडक्टिविटी मागी थिबो तो आकु भी छाड़िबो नाही। देन एन एसी अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई इक्वल्स टू कोन देला ई इज इक्वल टू ई नॉट sin omega t applied to a circuit containing resistance R, inductance L and capacitance C in the series. Write the expression for the current in the circuit, obtain the condition of resonance. अच्छा, the current in the circuit is I is equal to कौन सा I naught sin omega t plus or minus phi हम किसी भी उठे पर, and current in the circuit I equals to E naught upon R square plus XL minus X0 whole square root over I naught equals to कौन सा ना peak current केते हबो peak EMF upon R square plus XL minus X0 whole square, जोटी कि आपको भी आप में लिखि परिबा E naught upon R square plus XL जे ओमेगा लेबे कोई कास्तली माइनस X जे 1 upon ओमेगा 0 whole square रूट ओवर लिखि हबो, और E naught upon R square plus ओमेगा जे 2 pi FL minus 1 by omega c जे 2 pi f0 whole square रो root over, एमिति भी आमे कोइ परिबा। बुझि होछि कि नै? Then go to write the expression for the current in the circuit, obtain the condition of resonance. Resonance condition कौन? Resonance condition ना जतबे XL equals to XC होबो ताको हम कहबा resonance condition। तो resonance condition omega L, XL is equal to omega L and X is equal to 1 upon omega C। ताको हम लिखि परिबा omega square is equal to 1 upon LC, that is equals to omega equals to 1 upon LC रो root over, omega equals to 1 upon LC रो root over, बा हमें लिखि परिबा को omega is equal to 2 pi f is equal to 1 upon LC रो root over, that is equals to f is equal to 1 upon 2 pi LC रो root over। बुझेला कि नहीं? एंड डायरेक्ट जहाँ दे हम पके परिबा
जहाँ देछि हमें पके पारा फार्मूला एटा। अच्छा एटार जो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर आपको हमें कौन कहू छुआ जेड आपको हमें कौन कहू जेड इम्पेडेंस क्वेश्चन मागी पारे इम्पेडेंस इम्पेडेंस इज इक्वल टू कौन छुआ ना जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर बुझी पारछ ना। तो एट रेजोनेंस कंडीशन एट रेजोनेंस आम कौन कहले एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी तो ताले जेड इज इक्वल टू केते हिजिवो आर आर स्क्वायर रूट ओवर तो एट रेजोनेंस जेड इक्वल्स टू आर एट रेजोनेंस जेड इक्वल्स टू आर बुझेला कि नहीं बुझेला ना। तापर क्वेश्चन एमिति आस्थो फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टिव रिएक्टेंस कौन एक्सएल एक्सएल इक्वल्स टू देछि फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल मागिछि एल इंडक्टेंस केते देछि 40 मिली हेनरी जे 40 into 10 to the power minus 3 हेनरी and connected to 220 volt connected to 220 volt and 50 hertz f केते दे देछि 50 hertz source तमन किछ नै तो हमको एक्सएल काढिबार अछि एक्सएल इज इक्वल टू हम कोन जानछो ओमेगा एल ओमेगा इज इक्वल टू कोन 2 पाई एफएल तो डायरेक्ट 2 into पाई रे वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 22 डिवाइडेड बाय 7 into f केते देछि 50 into l केते देछि 40 into 10 to the power minus 3 बुझियो जे ना। तो ए भला क्वेश्चन डायरेक्ट आसीबो करि हो किबा xc मागी देथिबो xc मागी देथिबो कोन c दे देथिबो आउ f दे देथिबो काढी हो कि ना कहीं नाम जानचे xc is equal to 1 upon omega c जो 1 upon 2 pi fc। The magnitude of force experienced by an electrode placed at a point in the electric field is equals to its weight। कहला गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड भितर गोटे इलेक्ट्रॉन अछि जे केते फोर्स एक्सपीरियंस करछि mg फोर्स केते फोर्स एक्सपीरियंस करछि mg लेट इलेक्ट्रिक फील्ड केते e लेट इलेक्ट्रिक फील्ड e आमे जानि छे e इज इक्वल टू कोन छुआ f बाय हाँ कि ना तो F इज इक्वल टू QE F इक्वल्स टू QE तो हमको मागिल एक्चुअली E इज इक्वल टू कोन F बाय Q तो F इज इक्वल टू केते mg upon Q इलेक्ट्रॉन नो चार्ज कोन E तो कोन आसीबो आंसर mg upon E ताकू जदि हम पकेबा 9.1 into 10 to the power minus 31 इलेक्ट्रॉन नो मास into gravitation 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम बुझे लगे नहीं ताकू भी सॉल्व कर परिबो। A test charge q naught is brought from infinity along the perpendicular bisector रे गुटे चार्ज को इन्फिनिटी रो अना हला तो कहि छि कोन the work done q naught by the electric field of this dipole कहीं आमे जानछे जते बेले इन्फिनिटी रू गोटे डाइपोल बाइसेक्टर लाइन ले अना जाए बाइसेक्टर ऑन द बाइसेक्टर लाइन
एनी पॉइंट रे पोटेंशियल केते 0 एनी पॉइंट रे पोटेंशियल केते 0 हबो तो जदि पोटेंशियल 0 होची मागिची वर्क हम जानचे पोटेंशियल इज इक्वल टू W बाय Q तो W वर्क इज इक्वल टू V Q बाय Q V तो ताले V 0 हेने वर्क भी कोन हिजबो 0 बढ़िया क्वेश्चन MCQ आसीबार चांस अछि the angle between E and B in an electromagnetic wave रे E and B भीतर जदि ये E हला एंड ये B हला तब लिखि परिबा एंड B के रंग जाए बुझे कि नहीं तो ये दी जन परस्पर को कौन करती डिग्री ये दी जन परस्पर सहित कौन परपेंडिकुलर तो आंसर हम 90 डिग्री The distance between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C is doubled. अच्छा हम जानते हैं C is equal to epsilon A upon D. तो D कौन सा distance between the capacitor to parallel plate capacitor कोई चीज देखो ताले C कौन कोई चीज distance double लेगा ताले C dash is equal to कितना ही जो epsilon A by 2D सेटा को आई थी ना area double है गया एटा सेपरेशन डिस्टेंस डबल हे गेले बुझौ छी कि नै तो ताले हम लिखि परिबा c डैश अपॉन c इज इक्वल टू एप्सिलॉन a अपॉन d डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन a अपॉन ये 2d ये d देखते हला 1 by 2 तो ताले c डैश जो न्यू कैपेसिटेंस हो गते c by 2 बुझेला then monochromatic light of wavelength 600 nanometer enters from air into a glass medium of refractive index 1.5. The wavelength of refractive light inside the glass. Am monochrome wavelength of the medium is equal to wavelength of the air divided by refractive index. तो फॉर्मूला मन रखथिबो wavelength of any medium equals to wavelength of air divided by refractive index तो wavelength लगते 600 नैनोमीटर divided by 1.5 400 नैनोमीटर आंसर कत हो 400 नैनोमीटर कला 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैव ए पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट दीटा पॉइंट भीतर पोटेंशियल डिफरेंस कते दैछि 5 वोल्ट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम q दे देला कते 3 कूलम वर्क डन w इज इक्वल टू त हमें जानछे कोन छुआ v इक्वल्स टू w अपॉन q तो w इक्वल्स टू कोन हबो vq तो v कते 5 into 3 that is equals to 15 joule बुझियाला बुझी होछि कि नाही which 3 resistance each of 5 ohm are connected to form a triangle. Calculate the resistance between two ends of any arm. Any theta arm or end. Let a theta arm भितर काटिबा a and b भितर
तो ये दीटा कौन हो ईच ऑफ 5 ओम ईच ऑफ 5 ओम ईच ऑफ 5 ओम तो यही दी जन छुआ कौन हो सीरीज हो ए दी जन सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज 5 5 कते होला 10 10 तो 5 कौन हो पैरेलल तो रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस कते हो 10 गुणन 5 बाई 10 युक्त 5 50 अपन 15 जे 15 3 45 3.3 बुझेला कि नहीं बुझेला कि नहीं then the refractive index of diamond is equal to 2.41 and calculate the critical angle for light going from diamond to air critical angle मागिছে আমি জানছে sin c is equal to 1 upon mu calculate the critical angle of light going from डायरेक्ट फॉर्मूला sin c is equal to 1 upon mu mu तो देछि बुझेला a biconvex is made from glass refractive in one product both forces same question करा हला अच्छा a region in an electric field is specified by the following potential v x is equal to a upon x plus b where v is in volt and x is in meter जोटी कि v कौन अच्छी volt रे और x अच्छी meter रे मन पका यूनिट एंड डायमेंशन जतरा पढे दिन कहिथिले आलू सांगर आलू मिसिने कोन हबो आलू हबो तो एठी सेमिति ये v कोन अछि छुआ वोल्ट रे अछि तो वोल्ट रो अछि माने ये भी वोल्ट हेतिबो ये भी वोल्ट हेतिबो ये भी तो आमे संगे संगे जानि गले कि b रो यूनिट कोन हेतिबो वोल्ट हेतिबो एंड a by x रे भी यूनिट कोन हेतिबो तो ताले a रे यूनिट कोन हबो वोल्ट इनटू x दैट इज इक्वल्स टू वोल्ट इनटू मीटर वोल्ट इनटू मीटर हां कि ना बुझियला ना ते बोले क्वेश्चन उठे एमसीक्यू एभलिया क्वेश्चन उठे निश्चित आसीबो यूनिट्स एंड डायमेंशन क्वेश्चन उठे 100% आसीबो एटा करछे टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर फर्स्ट जॉइंड इन पैरेलल एंड देन जॉइन इन सीरीज फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एटा करछे रे करले an object is placed 12 cm what is problem करि परिबो ए पैरेलल ये बुझी होत ना कन्वेक्स लेंस रो 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by डायरेक्ट प्रॉब्लम ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर due to the refractive window root 3 where light travels from here to that window एतिक रहबो प्रॉब्लम तो एतिक रहइबो पिला माने प्रॉब्लम एतिक प्रॉब्लम को भल से करो काली सकाळ सुधा तुमरो प्रॉब्लम अपलोड हेतिबो काई ना एबे केतरा हला 12:40 हला तको एक्सपोर्ट पकई को अपलोड कला बेलू सकाळ हे जिवो तो सकाळे प्रथमे प्रॉब्लम को सब देखिबो मु ता सहित पीडीएफ भी तुमको शेयर कर दोउची तो पीडीएफ रे प्रॉब्लम देखि कि निजे प्रैक्टिस करो एंड मैक्सिमम तुमको जदी सकाळे 6टा रे अटेंड करछो 8टा भितर रे तुमरो प्रॉब्लम रो टेंशन सर जिवो सकाळ 8टा रो 9टा भितर तुमरो प्रॉब्लम रो टेंशन सर जिवो तापरे 2 मार्किया 3 मार्किया डिस्कशन करबो बुझियला कि नहीं।